Progress सुखहावा माताजी हैं, जो कि श्रील प्रभुपाद की बहुत ही वरिष्ठ शिष्या हैं. She is a very exalted Vaishnavi Mataji, disciple of Srila Prabhupada himself, and she's been preaching worldwide, and especially dealing with the psychological aspects of within devotional life also. हम भक्ति कर रहे हैं, परंतु साथ के साथ हमारी अपनी कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, ट्रेट्स होते हैं, तो माता जी उसकी हीलिंग में भी बहुत अच्छा सहायता करती हैं भक्तों की, पूरे विश्व में भ्रमण करती हैं. और आज और कल का जो 2 सत्र का ये सेमिनार है, उसका शीर्षक है मिथ्या अहंकार. हम सबको मिथ्या अहंकार है, राइट? हम लोग इस संसार में इसीलिए क्योंकि हमारा अहंकार, वास्तविक अहंकार जो कि भगवान के दास है, वो ना होकर मिथ्या अहंकार बन गया है. परंतु ये तो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है. प्रभुपाद जी ने बोला मिथ्या अहंकार है, हम बोलते हैं मिथ्या अहंकार हैं, परंतु कैसे ढूंढें कि वास्तव में मिथ्या अहंकार है या नहीं है, और फिर कैसे उसको ठीक करें. तो आइडेंटिफाइंग एंड रेक्टिफाइंग फॉल्स ईगो. तो माता जी विल बी स्पीकिंग ऑन दैट. सो हम सब माता जी का हार्दिक स्वागत करते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो माता जी अभी कल ही मायापुर से आई हैं. तो मायापुर में इस्कॉन लीडरशिप संघा था, जो कि इस्कॉन संस्था के विश्व भर से जो लीडर्स हैं, टेम्पल लीडर्स, वो आए थे. तो उस ILS में इस्कॉन लीडरशिप संघा में माता के सेमिनार्स थे, और वहाँ पे स्टॉल भी था और बहुत अद्भुत प्रचार किया. तो माता विशेष रूप से 2 सत्र का सेमिनार यहाँ पे कर रही हैं, तो ध्यान से श्रवण करेंगे. मोबाइल फोन्स कृपया प्रार्थना है स्विच ऑफ कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, और हम श्रवण कर सकते हैं. हरे कृष्ण. So I'm going to start with a little prayer, since you did all that very nice kirtan. Who were the people who were singing in the kirtan? Raise your hand. कौन कीर्तन कर रहे थे? बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे. Thank you for the nice kirtan. Thank you so बहुत much. बहुत धन्यवाद सुंदर कीर्तन के लिए. How many of you speak English? आप में से कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं? Okay. And then the rest of you speak Hindi. Okay, so we'll start with a prayer. Om Jnanatimrandasya Gyana Shalakaya Chakshur Ummilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagujatam Sahagana Ragunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu 𝒍𝒂𝒏𝒕 Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Hare Krishna, welcome. So nice to see you all here. How many of you know me from before? आप सबका स्वागत है. आपको देखकर अच्छा लग रहा है. आप में से कितने लोग मुझे पहले से जानते हैं? Okay. All right. So a couple of you know me. तो आप में से कुछ लोग जानते हैं मेरे बारे में. And the rest of you are going to get to know me. और बाकी लोग भी जानेंगे. We'll get to know each other. हम एक दूसरे को जान पाएंगे. So tonight's topic is called Detecting and Disarming the False Ego. तो आज का विषय है जो मिथ्या अहंकार है, उसको ढूंढना कि कहाँ पर है, और फिर उसको निहत्था कर देना. So sometimes we might equate the false ego to something like
a landmine that explodes in our face. How many of you have had that experience of feeling like your false ego exploded? तो हम कई बार मिथ्या अहंकार उस तरह होता है जैसे एक वोल्केनो टाइप का है, एकदम से फटकर हमारे चेहरे पर आकर गिरता है। तो आप में से किस किस को ऐसा हुआ है कि मिथ्या अहंकार एकदम से सामने आके खड़ा हो जाता है कभी? How many of you have had that experience? आप में से किन को ये ऐसा साक्षात्कार हुआ है, अनुभव हुआ है? So landmines are buried under the ground. तो जैसे बारूदी सुरंग होती है जो नीचे जमीन के नीचे होती है, And we don't know where they are. और हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर है। And a lot of our ego mechanisms are also buried. और जो हमारे मिथ्या अहंकार हैं वो भी इस तरह नीचे जमीन के नीचे छुपे हुए हैं। Sometimes we think, oh, I have a little false ego. We see the tip of the iceberg. I have a little false ego. कई बार हम देखते हैं कि हाँ मुझ में थोड़ा सा मिथ्या अहंकार है, जैसे एक बहुत बड़ा पर्वत है उसकी चोटी मात्र दिखती है, हाँ थोड़ा सा मिथ्या अहंकार है मेरे में। A little tip. And we fail to recognize that 90% of the iceberg is under the water. तो जो आइसबर्ग होता है उसकी चोटी जल के ऊपर दिखती है जो कि बहुत छोटी होती है, परंतु अधिकांश तो वो नीचे होता है, 90% पानी के नीचे होता है। तो इसी तरह हम भी मिथ्या अहंकार सोचते हैं थोड़ा सा हम में है, परंतु जो पानी की जो 90% है वो छुपा हुआ है। And so just like, I don't know if any of you saw the movie Titanic, but it's a historical event, that they saw the iceberg and they thought they saw it far enough away to turn, but because the mass of the iceberg was under, even though they turned when they saw the tip, the whole Titanic scraped a big hole and it sank. तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है, तो वो ऐतिहासिक घटना है। तो टाइटैनिक एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज़ था और उनको समुद्र में ये आइसबर्ग दिखा, उसकी चोटी दिखी और इनको लगा कि ठीक है अभी कुछ समय के बाद जाकर हम इसको अपनी दिशा मोड़ लेंगे, परंतु ये अनुमान नहीं लगा पाए कि बहुत ही बड़े विशाल था और नीचे बहुत अधिक फैला हुआ था। तो हालांकि जहाज़ मोड़ने का प्रयास किया परंतु आइसबर्ग से टकरा कर वो उलट गया। And the landmines that are buried, just like part of the iceberg under the water, if we don't know where they are, if we can't detect where they are, we're going to be unpleasantly surprised. और इसी तरह जो हमारा मिथ्या अहंकार है वो नीचे छुपा होता है, और यदि हम ये पता नहीं लगा पाते कहाँ छुपा है तो फिर हमारे जीवन में ऐसी दुर्घटनाएं होंगी जो कि हमें अच्छी नहीं लगेंगी। So the first thing in dealing with our false ego is to detect where is it. तो अपने मिथ्या अहंकार को सबसे पहले ढूंढना होगा कि कहाँ पर है वो। Once we detect where it is, then we can disarm it. But if we don't detect where it is, we can't do anything. तो सबसे पहले मिथ्या अहंकार ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये पता नहीं है कहाँ छुपा है मिथ्या अहंकार तो हम उसको निहत्था कैसे कर पाएंगे। I'd like to say that it seems to me that we know more about our cell phones, how to operate our cell phones and our computers, than we know about how to operate the sophisticated human machinery. तो मैं ऐसे बोलना चाहूँगी कि हमें अपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर के बारे में तो अधिक पता है इसकी अपेक्षा कि हमारा शरीर कैसे काम करता है। Now, I remember when I was first learning how to use a computer, it was a little frustrating because I didn't know which buttons to push. मुझे याद है जब पहली बार कंप्यूटर पे काम कर रही थी तो मेरे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कौन सा बटन दबाऊं। I mean, could you just push the buttons and get me into Word so I can do what I need to do? Because I knew how to type, I just didn't know how to get into Word. तो मुझे पता नहीं था कि कैसे वो शब्दों को वहाँ पर टाइप किया जाए। And sometimes I see my little granddaughter, she likes to look at pictures. So she's hitting the phone, trying to make the pictures come up, but she doesn't really know what she's doing.
तो कभी मैं अपनी पोती को देखती हूँ कि वो मोबाइल फ़ोन में पिक्चरें देखती है और उन पर इस तरह हाथ मारती है, परंतु समझ नहीं आता क्या कर रही है वो। That's about the skill level we have in dealing with our false ego. तो जिस तरह छोटी सी बच्ची को पता नहीं है कि जो मोबाइल में पिक्चर देख रही है उसके साथ क्या करे, उसी तरह हमारे पास भी कोई निपुणता नहीं है अपनी मिथ्या अहंकार को ढूंढ पाने की। So the false ego is kind of like this big, ominous cloud, but it's so big and it's so vague, we don't know what to do with it. So we usually don't do anything. तो मिथ्या अहंकार एक बहुत बड़ा बादल के समान है, इतना बड़ा है कि हमें पता नहीं कि उसका क्या करें। So let's look at this. Why do you think Krishna even gave us a false ego? Does anybody have any idea? Why did Krishna give us a false ego? तो हम ये भी सोच सकते हैं कि कृष्ण ने क्यों हमें मिथ्या अहंकार दिया। Anybody have कोई any विचार idea? इसके बारे में, भगवान ने मिथ्या अहंकार क्यों दिया? Anybody have any idea? Back here, go ahead. Oh, you know the answer. You can't answer this question then. Okay, you can't answer the question because you already know the answer. Anybody who didn't read the book, go ahead. Yeah, that's what most people say. Go ahead. तो भौतिक संसार में ताकि हम भोग विलास कर सकें, इसके लिए मिथ्या अहंकार दिया। I'd like to tweak that answer a little bit because if you've ever played a board game, a board game, you need some kind of a piece to move around the board, right? तो you mean chess, board game? It could be chess, yeah, you need pieces to move around. तो जैसे कोई आपने कोई गेम खेला हो तो उसमें आपको कुछ प्यादे चाहिए होते हैं आगे पीछे करने के लिए, मोहरे चाहिए होते हैं आगे पीछे करने के लिए। And probably none of you have done this, but maybe somebody might have played a video game. You can't play if you don't have a character. You need some kind of a character in order to engage in the play. तो इसी तरह अगर आपने वीडियो गेम खेला है तो उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, उसी के माध्यम से वीडियो गेम खेल पाएंगे। So if we didn't have an ego, we would be vegetables. तो इसी तरह यदि हमारे पास अहंकार नहीं होता तो हम तो एक सब्जी बनकर रह जाते। We wouldn't know how to talk, we wouldn't know how to walk, we wouldn't know how to interact, we wouldn't have any place in the world, we wouldn't know our place and we wouldn't know how to interact. यदि अहंकार नहीं होता तो हमें पता नहीं होता कैसे बात करें, कैसे चलें, कैसे आपसी संबंध एक दूसरे से रखें, कुछ नहीं पता होता। Just like if you have a computer that has no software programming. What do you do with the computer with no software programming? जैसे आपके पास कंप्यूटर आ गया और उसमें कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है तो क्या करेंगे ऐसे कंप्यूटर का? What can you do with the computer with no software programming? क्या कर सकते हो आप ऐसे कंप्यूटर का? कुछ कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कुछ कर सकते हैं ऐसे कंप्यूटर का? Nothing. कुछ नहीं कर सकते, It's useless. बेकार है वो। It's just a piece of machinery and there's no operating system, right? बस एक मशीनरी का पीस है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। So our ego, rather our egos, because I'm going to tell you we have a bunch, our egos are our operating systems. तो इसी तरह जिस तरह कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी तरह हमारे जीवन में चलने के लिए ईगोज होते हैं हमारे They पास। help us to operate in life. तो अहंकार है वो हमें जीवन में आगे पीछे करते हैं। So there is a purpose. तो इस तरह हम देखते हैं कि एक कारण है अहंकार होने के पीछे। However, sometimes we get confused and we think the egos are us, and that causes some problems. परंतु कई बार हम थोड़ा दुविधा में आ जाते हैं और सोचते हैं कि अहंकार और मैं एक ही हैं और उससे समस्या बढ़ जाती है। So now I'm going to tell you how the false ego came into being. तो अभी आपको बताएंगे कि ये मिथ्या अहंकार कैसे आया। You're getting a review. So originally, we're soul, we're part and parcel of Krishna, right? तो मूल रूप से हम आत्मा हैं और भगवान के अंश हैं। And
that soul has some pain, there's some grief there for that soul. और ये जो आत्मा है इसको कुछ व्याकुलता है. We don't know who we really are. That's disconcerting. तो सबसे बड़ी व्याकुलता तो यही है कि हमें पता नहीं कि हम कौन हैं. We're missing our connection with our best friend Krishna. हमारे सबसे अच्छे मित्र कृष्ण से हमारा संबंध नहीं है. We're not in the spiritual world. That's pretty it's messed up. हमारा मूल रूप आध्यात्मिक जगत में है परंतु अभी वहाँ पर नहीं है. ये भी दुविधा और समस्या पैदा करता है हमारे लिए. So we came here thinking we were going to have some fun, but we're missing important connections that really help us to thrive. हम यहाँ पर ये सोच कर आए कि यहाँ पर कुछ मजा कर लेंगे परंतु वो जो संबंध है भगवान से है नहीं, तो अब कुछ मिस कर रहे हैं अपने जीवन में हम. So now this soul, this grieving soul, is placed in a human machine. तो अब ये जो रोती हुई व्याकुल आत्मा है इसको मनुष्य देह प्राप्त किया, इसने मनुष्य देह प्राप्त किया है. I'd like to say that the human machine is the most challenging life there is. तो जितनी भी तरह के जीवन हैं उन सब में से सबसे अधिक चैलेंजिंग है वो मनुष्य जीवन है. In a deer's body, an animal's body, maybe a coyote is chasing the deer. So the deer runs to her den and finds a protected place where the coyote can't come. She shakes off the trauma. तो जैसे एक हिरण के पीछे कोई जानवर लग गया है और हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागता है और भाग कर एक स्थान पर पहुंच जाता है और हाँफता है और बैठ जाता है. She doesn't start complaining and saying, "Boy, that coyote was so mean." तो हिरण के लिए बस इतना ही है कि जान बच गई तो लाखों पाए. अब वो जान बचने के बाद इसके बारे में चिंता नहीं करता, अरे उसने ऐसा किया मेरे साथ, वैसा किया मेरे साथ. She doesn't start gossiping to all her friends about how coyotes are just really, they shouldn't be here on this world. तो वो अपने मित्रों के साथ बैठकर ये बातचीत नहीं करता हिरण कि किस तरह जो दूसरे जीव जंतु हैं वो नहीं होने चाहिए, हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, ऐसी बातचीत तो नहीं करते वो. She doesn't start an anti-coyote movement. What movement? She doesn't start an anti-coyote movement. तो वो जो घातक पशु है उसके अलावा उसके विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं छेड़ देते वो लोग. She shakes off her pain and goes on with life. बस अपने जो उसका दर्द था उसको हटाता है हिरण और फिर जीवन में आगे बढ़ चलता है. Human beings, on the other hand, we have this thing called a mind. परंतु मनुष्यों के पास ये जो मन है, and this mind is meant for higher consciousness. और वैसे तो मन ये जो है ये ऊंची चेतना के लिए मिला है. And it helps us to maneuver and figure out life. और ये हमारी सहायता करता है इस जीवन में जीवन को देखने के लिए क्या है आसपास. But sometimes it gets a little carried away. परंतु कई बार मन जो है वो थोड़ा सा पागल सा हो जाता है. Our mind is a meaning-making machine. What machine? Our mind is a meaning-making machine. तो हमारा मन जो है वो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ ढूंढने का प्रयास करता है. We label everything. This is a chair. This is a microphone. This is the floor. These are lights. So that we can know what to do in life. I can sit on the chair. I can turn on the lights. तो जो मन है वो अलग अलग वस्तुओं को उनका नाम देता है, उनका क्या महत्व है इसके बारे में सोचने का प्रयास करता है. However, our mind gets carried away and it makes meanings like, there's not enough light in here. Who didn't put enough lights in here? I'm just making this up, but just like in that example. तो ना केवल मन इसके बारे में सोचता है कि ये कुर्सी है, ये बैठने के लिए है, ये फर्श है बैठने के लिए है, ये लाइटें लगी हैं रोशनी देने के लिए, परंतु मन ये भी सोचता है कि अरे किसने लाइटें नहीं जलाई, लाइट तो और होनी चाहिए थी, लाइट बहुत कम है अभी. Or there's too much light in here. It distracts me from looking at the deities. या फिर सोचता है कि कुछ ज्यादा ही लाइट है, इससे मुझे मेरा ध्यान भटक रहा है. We can make up meaning about anything, even lights. तो इस तरह मन
इवन एक छोटी सी रोशनी चीज है, रोशनी है, लाइट है, उसके बारे में बड़े बड़े अर्थ निकालना शुरू कर देता है. What to speak of other human beings? Boy, we can really make meanings about other human beings. और क्या बात करें कि दूसरे मनुष्यों के बारे में चिंतन करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, ऐसे हमारा मन सोचना शुरू कर देता है. Okay, so we're going to put this topic, the meaning-making mind, over here, and now we're going to go back to the design of the false ego. तो अभी हम ये जो हमने चर्चा की कि हमारा मन है वो हर चीज में कुछ ना कुछ अर्थ निकालता है, इसको थोड़ा साइड पर रखते हैं और वापस मिथ्या अहंकार की ओर आगे बढ़ते हैं. So the false ego, I mean the real ego, the soul, is grieving, and it gets into a human body, and maybe if it's fortunate at 7 months, maybe it remembers some of its past lives, maybe even up to 100 of its past lives. It says that in Bhagavatam. तो जो आत्मा है उसको मनुष्य देह जब प्राप्त होता है तो यदि बहुत भाग्यशाली है 7 महीने की आयु में, तो जैसे भागवत में बताया भी गया है कि अगर बहुत अधिक भाग्यशाली है उसको पिछले जन्मों के बारे में स्मरण होता है, यहाँ तक कि 100 जन्मों का भी स्मरण हो सकता है. And it prays to Krishna, dear Lord Krishna, oh my gosh, I messed up so many times. I'm missing you. I want to remember you. Please don't let me forget you. और फिर इस तरह यदि भाग्यशाली होता है जीव तो फिर भगवान को प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैंने पिछले जन्मों में कितनी गलती कर दी, आपसे दूर रहा, अब मैं आपके विरह में रह नहीं पा रहा हूँ, मैं आपके साथ आना चाहता हूँ. And then we go through the trauma of birth and we forget. परंतु फिर जन्म होता है और जो अपने आप में कष्टदायी है और फिर से जो जीव है भूल जाता है. But not completely. It's still in there. We still feel it. We just don't have it clearly distinguished. We still feel it inside. परंतु पूरा नहीं भूलता जीव, अंदर कुछ ना कुछ रहता है उसको उसके बारे में स्मरण, परंतु बाहरी रूप से भूल जाता है वो. So now this somewhat conscious jiva soul is born into a baby body. और फिर ये जो जीव है ये मनुष्य का देह प्राप्त होता है और बच्चे के रूप में जन्म लेता है. And that baby body, we're pretty unconscious, but we realize, if we need, we cry. It just naturally, instinctually, we cry if we need something. और जब हम छोटे बच्चे के देह में होते हैं तो कुछ चेतना अधिक विकसित नहीं होती और फिर हम रोते हैं, कुछ भी चाहिए तो हम रोते हैं. And generally our parents can take care of our basic needs when we cry. और साधारणतः जब बच्चा रोता है तो उसके माता पिता उसकी जो कुछ आवश्यकता है उसको पूरी करता है. माता जी से निवेदन है जिनका बच्चा है उसका ध्यान रखें प्लीज, शांत रहे बच्चा. And our meaning making mind hasn't been too developed yet. और ये जो हमारा मन है जो हर चीज में अर्थ निकालता है अभी अधिक विकसित नहीं हुआ है. However, somewhere when we're young, maybe pre-verbal, maybe 2, maybe 3, maybe 4, maybe 5, somewhere in that age. परंतु जब हम 2, 3, 4 साल के हो जाते हैं something happens. कुछ होता है. Maybe we get a baby brother or baby sister. या तो भाई बहन कुछ आता है. Maybe someone yells at us or hits us. कोई हमें मारता है. Maybe somebody gets sick or maybe we get really sick. कई बार हम बहुत अधिक बीमार हो जाते हैं, कोई और बीमार हो जाता है. Maybe somebody dies or somebody leaves. हो सकता है कोई छोड़ के चला जाता है, कोई मर जाता है. Maybe we're put with some teachers or preschool, pre-K with people we don't know and we're scared. हो सकता है हमें स्कूल में भेज दिया गया है और उन लोगों के बीच में होते हैं जिनसे हमें भयभीत होते हैं हम. Maybe our parents go to the store and leave us sleeping and we wake up and we're alone. हो सकता है कि माता पिता कुछ कार्य करते हों और जब हम सोकर उठते हैं तो हम घर में अकेले पाते हैं अपने आप को, दोनों काम पे चले गए हैं माता पिता. Something happens. तो कुछ ना कुछ होता है इसमें से. And we don't know what to do. We're confused. We're scared. We're upset. और हमें पता नहीं कि क्या करें. हम बहुत भयभीत हैं और बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या नहीं करें. And we look around and it seems that nobody else is upset. It just seems like we're the only one that's upset. और फिर जब आसपास देखते हैं तो लगता है कि और तो कोई ऐसा व्याकुल नहीं है, बस मैं ही व्याकुल हूँ.
So that's kind of the upset of the soul, the grieving soul, then comes through this child mind at this time when there's this kind of traumatic situation. The soul, this grieving of the soul comes through the child mind, and the child mind misinterprets like I shouldn't be here, I don't belong here. It misinterprets all that, but it just detects that something's not right, something doesn't feel right, it doesn't feel right, something doesn't feel right. It's the soul saying we're not in our right place. तो कुछ ऐसा होता है, बचपन की अवस्था में ही होता है, बहुत दर्दनाक हादसा कुछ ना कुछ होता है और उसमें एक तरह से आत्मा व्याकुल हो जाती है और उसी समय जो मन है, जो अभी विकसित नहीं हुआ है, वो मन आकर इस आत्मा को पकड़ लेता है और फिर कुछ समझ नहीं आता, परंतु ये लगता है कि कुछ मेरे साथ हुआ है और कुछ सही नहीं है. क्या सही नहीं है इसका कुछ अर्थ नहीं पता, परंतु मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा, ऐसा सोचता है मन. And instead of something's not right, our little child mind interprets something is wrong with me. और बजाय इसके सोचने के कि कुछ गलत हो रहा है या क्या गलत है समझ नहीं आ रहा, जो ये मन है जो विकसित नहीं हुआ, वो ये सोचना शुरू कर देता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है. It's part of our kind of our guilt for not for coming here, and kind of our grieving, like what am I doing here? तो सूक्ष्म रूप से क्योंकि हम भगवान से दूर हैं और हम एक तरह से पश्चाताप का भाव है सूक्ष्म रूप से, तो वही एक तरह से व्यक्त होता है इस भाव के रूप में कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है. So that's the first layer of our false ego. It's an emotional guilt operating system, EGOS, emotional guilt operating system. That's our first layer of false ego. तो ये सबसे पहला स्टेप बनता है या लेयर बनता है हमारे मिथ्या अहंकार का, सबसे पहला आवरण बनता है मिथ्या अहंकार का, जिसमें इमोशनल guilt operating system, EGOS, egos number 1. तो भावुकता के धरातल पे ये एक धरातल बनता है. Now, that doesn't feel very good, and we don't like that, and we don't want to feel like there's something wrong with me, so immediately we have to cover that with something else. तो परंतु हम इसको स्वीकार नहीं करना चाहते कि मेरे साथ कुछ गलत है, इसको स्वीकार नहीं करना चाहते और उसको छुपाना चाहते हैं, और छुपाने के लिए एकदम से उसके ऊपर एक दूसरा धरातल हम लेकर आ जाते हैं. So we cover that with a protecting, preventing persona. और फिर एक आवरण हम उसके ऊपर लेके आ जाते हैं जो उसको छुपाने का कार्य करता है. We might end up being really good little girls and boys, making sure we do all the things so our parents, like us, and so they appreciate us and they don't hurt us, or they give us attention and love. तो कुछ ना कुछ होता है कि चाहे माता पिता या हमारे जो बड़े बूढ़े हैं आसपास, वो हमारी सराहना करते हैं, पीठ पे थपथपी देते हैं. तो इस तरह से कुछ पॉजिटिव चीज़ के माध्यम से हम वो जो व्याकुलता की स्थिति थी उसके ऊपर आवरण लगाने का प्रयास करते हैं. So that's 2 false egos. तो ये दूसरा मिथ्या अहंकार का धरातल हो जाता है. Now, when we grow a little older and we go out in the world with our peers, we start looking around, we become more aware of others, and we realize like, oh, he's smarter than me, she's prettier than me, oh my gosh, they can do that, and she's more artistic than me, and we start comparing, the comparing persona. और फिर जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं और स्कूल कॉलेज चल जाना शुरू करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, तुलना करने का प्रयास करते हैं. वो मुझसे सुंदर है, वो मुझसे स्मार्ट है, वो मुझसे बुद्धिमान है इत्यादि. तो इस तरह से दूसरों से कंपेयर करने का प्रयास करते हैं, तुलना करने का प्रयास करते हैं,
और ये तुलना करने वाला एक तीसरा धरातल मिथ्या अहंकार का बन जाता है। And sometimes our parents even compare us with others. Why aren't you like your cousin? Look how good they are. Why aren't you like your cousin? So that comparing energy. और फिर ऐसे भी होता है परिवार में कि माता पिता भी बोलते हैं कि तुम अपने भाई की तरह क्यों नहीं हो, तुम अपने बहन की तरह क्यों नहीं हो। तो इस तरह से ये तुलना करने का आवरण बन जाता है। And that doesn't feel very good either. और वो भी हमें अच्छा नहीं लगता। So now we got to cover that. तो And we put a proving persona on top of that. तो अब क्योंकि हमारी दूसरों से तुलना की जा रही है, चाहे स्वयं कर रहे हैं दूसरे कर रहे हैं, और ये हमें अच्छा नहीं लगता, तो ये एक मिथ्या अहंकार का आवरण बन गया। अब इसको छिपाने के लिए एक और आवरण बना लेते हैं जिसमें ये हम प्रूफ करना चाहते हैं कि हम बेहतर हैं। So I'm going to prove maybe I'm not as good at art, but I'm going to prove I'm going to get the best grades in math. I'm going to prove that I'm smart too. तो हम इस तरह से प्रूफ करना चाहते हैं दूसरों को कि हो सकता है मैं एक चीज में अच्छा नहीं हूं पर दूसरी चीज में बहुत अधिक अच्छा हूं, और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा किस तरह मैं अच्छा हूं। So we got 4 layers on top of the ego right now. तो इस तरह मिथ्या अहंकार का चौथा आवरण आ जाता है। And then, maybe when we're, I don't know, around 18, we go to a hostel, or we get a job, or we get married. We move away from maybe our close family, and we start to go out in the world, and we're confronted. Now we really got to figure out who we are and what are we going to do in this world. And so we're confronted. That's the confronted persona. और फिर जब हम थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, 18-20 साल के हो जाते हैं, चाहे विवाह हो जाता है या कॉलेज जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं या नौकरी करते हैं, तो इतना बड़ा संसार है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, और फिर उन सब के साथ उन सब के बीच में रहना पड़ता है, और एक तरह से प्रतियोगिता में हम लोग घुस जाते हैं। तो ये एक और धरातल बनता है मिथ्या अहंकार के ऊपर। And that doesn't feel very good. So now we got a quick try to figure out how we can produce some results in the world that are going to make us feel good about ourselves despite all this pain and proving and hiding and all that stuff. और ये भी हमें अच्छा नहीं लगता जब पूरे संसार के सामने खड़े हैं और इतना बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो फिर हम बहुत जल्दी से कुछ एक करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं अपने आप को दूसरों को कि हम अच्छे हैं, और इस तरह से एक और ये आवरण बन जाता है मिथ्या अहंकार के ऊपर। So that's a lot of weight. We're carrying 6 personas on top of our souls. It's a kind of a heavy weight. तो इस तरह से आत्मा के ऊपर 6 आवरण बन जाते हैं मिथ्या अहंकार के, जो कि बहुत भारी पड़ जाते हैं हमारे लिए। But they're so invisible, we don't know they're really there. They're kind of like apps open on our phone that are running in the background. You know about apps running in the background, right? They're draining our batteries, but you know what? Where is it? तो ये इस तरह 6 बहुत भारी भरकम आवरण बन जाते हैं मिथ्या अहंकार के हमारी आत्मा के ऊपर, परंतु उसको हम ढूंढ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जिस तरह ऐप होता है मोबाइल पे, तो ऐप पीछे छुपा रहता है और हमारी बैटरी को वो ड्रेन करता रहता है, परंतु बाहर देखा जाए तो लगता है कि कहाँ पे है, क्या है, दिख नहीं रहा कुछ। So these are all the meanings that our mind makes. I'm not good enough, I'm not worthy, oh no, I got to protect myself. We put up the shield. Go ahead. तो इस तरह मन कई तरह के हमारे विचार हमारे ऊपर फेंकता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे में ये कमी है, फिर उसको छुपाने का प्रयास करता है कि नहीं, मैं कैसे अपनी अच्छी चीज दिखाऊं दूसरों को। I'm worse than others, I'm better than others. No. मैं दूसरों से बुरा हूँ, मैं दूसरों से अच्छा हूँ, नहीं, क्या है? I gotta prove myself in the world. मुझे सबको दिखाना है, कुछ करके दिखाना है सबके सामने। I'm on my own, I don't know who the heck I am, I don't know why I'm here, I don't know what I'm supposed to do, I better figure it out quick. फिर ये विचार आता है कि ये आवरण आता है कि मैं कौन हूँ, क्या है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर उसके ऊपर एकदम से फिर दूसरा आवरण आता है कि जो भी है छोड़ो, मुझे जल्दी प्रूफ करना है अपने आप को। All that weight we're carrying around and it's invisible, we can't see it. तो ये सारे के सारे भारी भरकम वजन हम उठा के घूम रहे हैं, जिनको हम देख भी नहीं पाते वास्तव में। All that meaning that our meaning making mind is making about us. तो हमारा जो मन है जो कि हर चीज में अर्थ निकालता है, वो इस तरह हमारे अपने बारे में कुछ अर्थ निकाल रहा है। So now we have a few names to detect
what part of us, the wounded child, the inner critic, the comparing, we have some names in order to detect different aspects of our false ego. तो इस तरह हमने अब कुछ 6 नाम हमारे सामने हैं कि हम देख सकते हैं कि कहाँ पर कुछ बचपन में कुछ हादसा हुआ था, कुछ तुलनात्मक चीज़ें दूसरों से हुई, तो क्या हुई जिसके माध्यम से मिथ्या अहंकार हमारे बढ़ता चला जाता है. Now, in order to disarm the false ego, once we detect it, we need to practice some connection with that soul inside. और इस बात को ढूंढने के बाद कि हमारा मिथ्या अहंकार किस धातु पे कार्य कर रहा है, उसको निहत्था करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से यानी आत्मा के साथ संबंध जोड़ना होगा. That little soul is kind of suffocating under all of that. और ये जो बेचारी आत्मा है ये नीचे इसको ये सांस भी नहीं ले पा रही, बेचारी परेशान है, नीचे दबी हुई है इन सबके नीचे. But when we come to Krishna consciousness, what we usually do on top of those 6 layers is we try to paste Krishna consciousness on top of all those layers. Now I have the absolute truth. Now I can really prove to the world that I know what I'm doing and I can produce lots of devotional service. और जब हम इस तरह आते हैं कृष्ण भक्ति में, इन सब भारी भरकम धरातलों को लेकर मिथ्या अहंकार के, तो हम इसके सबसे ऊपर एक लगा लेते हैं आवरण कृष्ण भक्ति का. अब मैं भक्ति समझ गया हूँ, अब भक्ति करनी है और भक्ति के माध्यम से पूरे संसार को दिखाना है कि मैं क्या हूँ. Now, I used super glue, so all that external Krishna consciousness stuck on top for 27 years, but eventually it fell off and all this other stuff was revealed. तो इस तरह हम भक्ति का अभ्यास करते रहते हैं, परंतु जो नीचे भारी भरकम मिथ्या अहंकार के आवरण हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं. और फिर भक्ति कई साल प्रयास करने के बाद वो जो ऊपर का आवरण हमने जो लगाया था, चिपकाया था भक्ति का, वो भी नीचे गिर जाता है और फिर जो नीचे वास्तविकता है वो सामने निकल कर आती है हमारी. Krishna consciousness is not about quick fixing and pasting something on top. It's actually about pulling apart the layers and unburying the soul that's suffocating inside. तो कृष्ण भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि जो नीचे दबा हुआ है उसके ऊपर और दबा दें कृष्ण भक्ति के माध्यम से. नहीं, कृष्ण भक्ति का मतलब जो नीचे गंध पड़ा हुआ है उसको एक एक करके बाहर निकालें और जो हमारी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति है उसके साथ साक्षात्कार करें. Krishna consciousness is about being conscious. We can't be Krishna conscious unless we're just at least conscious first. तो कृष्ण भावना का मतलब हुआ कि हमें सबसे पहले सचेत रहना पड़ेगा, सब चीज़ों आसपास की वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, उसके बाद कृष्ण के प्रति सचेत हो पाएंगे. So, that's kind of the story about this soul inside. But what do we usually do to this soul inside? Usually we identify and we put forward the proving and the producing personas because they look really good. तो हम भक्ति के नाम से कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ सफलता दिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ परिणाम दिखाने का प्रयास करते हैं. And they hide all that pain and all that what we think is worthless, unequipped, unlovable. It hides all that pain. और इससे जो हमारी वास्तविक स्थिति है, जो कि हमारी गंदी स्थिति है, जो प्रेम करने योग्य नहीं है, उसको हम छुपा देते हैं. We don't deal with our pain. हम जो अपना अंदर का दर्द है उसके साथ डील नहीं करते. We hide it. हम उसको छुपाते हैं, अंदर के दर्द को छुपाते हैं. But when we hide the pain, it doesn't go away. परंतु छुपाने से वो जो अंदर का दर्द है वो चला नहीं जाएगा. It actually grows bigger, like an infection that you're not dealing with. It's growing, just like an app playing in the background. It's draining us. It's growing. जैसे कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, उस पे हम काम नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा.
उसी तरह अंदर का दर्द है, उसको छिपाने से कुछ नहीं होगा, वो और बढ़ता चला जाएगा. A lot of times we beat ourselves up, even though we're putting forth these protective mechanisms inside. We're denigrating ourselves and shaming ourselves and calling ourselves bad names. I'm so fallen, I'm so stupid, I'm so unlovable, I'm worthless. तो हालांकि बाहर से हम भक्ति के माध्यम से ये अपने आप को दूसरों को दिखाने का प्रयास करते हैं, हम अच्छे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इत्यादि, परंतु अंदर हम बहुत ही दर्द को दबाया हुआ है और अंदर यही भाव रहते हैं, मैं कितना पतित हूँ, कितना गंदा हूँ, और इस तरह अपने बारे में कुछ छोटे से छोटा या गंदे से गंदा सोचते रहते हैं. We're identifying with these layers of false ego, and we're not recognizing there is a little jiva soul in there that's suffering, and we need to unbury it. It's like an earthquake, and the building fell on the soul, and we got to unbury it. और हम इस बारे में नहीं सोच पाते कि जो हम बेचारे खुद हैं, यानी आत्मा है, वो जैसे एक भारी पहाड़ के नीचे दबी पड़ी है. ये मिथ्या अहंकार के पहाड़ हैं, इसी में परेशान हैं, पर आत्मा बेचारी नीचे दबी पड़ी है. We need to have some compassion and some respect for that little soul. तो वो जो आत्मा है उसके प्रति हमें कुछ दया का भाव रखना है. So sometimes we think we need to get respect from the outside. कई बार हम सोचते हैं कि हमें बाहरी आदर सम्मान की आवश्यकता है. Generally, we need to get respect from the outside because we have none for ourselves. वास्तव में हम दूसरों से आदर सम्मान इसलिए चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं, क्योंकि स्वयं हम अपना सम्मान या आदर नहीं करते. Our little cracked, pained persona that thinks it's worthless or no good or not good enough or unlovable, that little soul, there's a hole there. There's a hole, it's wounded. तो जो आत्मा है उसको चोट लगी हुई है, वो अपने बारे में ये सोचती है कि बहुत बुरी हूँ. And we try to get love from the outside. This is what I did as a young girl. I wanted my mother to love me, so I did all the right things so she would say, "Oh, good girl, you got good grades." तो मैंने युवावस्था में ही किया, एक युवती के रूप में मैंने सारे वो कार्य किए जिसके माध्यम से माँ प्रसन्न हो जाए और मुझे थपथपी देगी, तुमने बहुत अच्छा किया, अच्छे नंबर आए, बहुत अच्छी हो, इस तरह के कार्य किए. And that felt good momentarily. और वो उस समय के लिए तो अच्छा लगा, until it went down the drain परंतु कुछ समय के बाद वो नीचे बह गया because of the hole. क्योंकि उसमें एक छेद था. So then I had to go get some more. तो फिर मुझे कुछ और प्रयास करना पड़ा And it went down the drain. और फिर वो भी बह गया. And get some more and get some more. और फिर और लाओ और करो, परंतु सारा का सारा बहता गया. We're grasping for love and for acknowledgement and for appreciation. तो हमें प्रेम मिले, हमें सराहना मिले, हमारा नाम लिया जाए, उसके पीछे हम लोग एक तरह से भागते रह जाते हैं. And for respect, आदर मिले, because we have none for ourselves. और उसका मूल कारण ये है क्योंकि हम खुद अपने आप का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते. Now, because we get confused with the false ego system and our soul self, we think self-respect and self-worth might be kind of selfish. और क्योंकि हम मिथ्या अहंकार और आत्मा में भेद नहीं कर पाते, दोनों को एक ही समझते हैं, तो फिर जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको हम सेल्फिशनेस समझ लेते हैं. But we're talking about the soul here. The soul self has worth because Krishna made that soul, made that individual jiva. He didn't make a mistake. He made each and every one of you perfect, whole, and complete. Sri Upanishad says, we're perfect, whole, and complete. तो परंतु जो आत्मा है वो अपने आप में पूर्ण है और सम्मान पाने योग्य है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको बनाया है
और भगवान कृष्ण ने कोई गलती तो की नहीं, तो आत्मा अपने आप में पूर्ण है। And we can respect that this little soul is on a noble journey to get out of the clutches of the material energy. That is a noble task. और यही मात्र समझ लेना कि जो आत्मा है वो इस भौतिक पदार्थ या संसार से निकलकर भगवान से मिलने का प्रयास कर रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। However, instead of having some respect and compassion on this little soul, we beat it up. परंतु बजाय इसके कि हम इस बात को स्वीकार करें कि आत्मा ये अच्छा, हम यानी आत्मा स्वयं ये अच्छा कार्य कर रहे हैं भगवान से मिलने का, और उसको आदर दिया जाए, सम्मान दिया जाए, उसके प्रति दया का भाव रखा जाए, हम उसको पीटना शुरू कर देते हैं, अपनी ही आत्मा को पीटना शुरू कर देते हैं। Just imagine a little 1-year-old learning how to walk. Imagine. जरा चिंतन करिए कि कोई छोटा बच्चा है 1 साल का और चलना सीख रहा है, चलने का प्रयास कर रहा है। Child's holding on to the chair and wobbling and takes one hand off and falls down. और वो कुर्सी को पकड़ता है, मेज को पकड़ता है, हिलता है, कांपता है, चलने का प्रयास करता है, फिर गिर जाता है। Imagine the parents saying, "You are so weak. You're just so weak. Come back when you can walk." सोचिए यदि माता पिता ऐसे बोले कि तुम बड़े कमजोर हो, हमारे पास तभी आके मुंह दिखाना जब खुद चल पाओगे। A child might sit down and cry बच्चा बेचारा बैठ के वहाँ रो पड़ता है। when he hears that from the parents. जब माता पिता ये बोलेंगे तो और रो पड़ेगा वो, And he might not feel like standing up for a while. और कुछ टाइम तक उसको खड़े होने की हिम्मत ही नहीं होगी, उसको लगेगा नहीं कि खड़ा हूँ। Maybe weeks or months. हो सकता है कुछ हफ्ते लग जाए उसको दोबारा हिम्मत कर पाने के लिए, खड़े होने के लिए। Then imagine that the child finally gets it together and starts walking and takes 2 steps and falls down. और सोचिए बच्चा आखिरकार खड़ा होता है और 2 कदम चलता है और फिर गिर जाता है। And the parents say, "You're so fallen. Come back when you can run." और माता पिता फिर बोलते हैं तुम अभी फिर से गिर गए, तुम अब तभी हमारे पास वापस आना जब भागना शुरू कर दोगे। Would we do this to a little child? क्या हम छोटे बच्चे के साथ ऐसा Learning to करेंगे walk. कभी? Would we do this? हम करेंगे कभी बच्चे के साथ ऐसा? No, but that's what we do to ourselves, learning how to walk on this spiritual path. That's what we do to ourselves. तो हम बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं करेंगे, परंतु अपने स्वयं के साथ ऐसा करते हैं। हम खुद जब चलने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति में, तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते, अपनी भक्ति को अप्रिशिएट नहीं करते, और अपने साथ अपनी ही पिटाई स्वयं करते हैं। It's hard enough for a soul just to be in a human machine that has consciousness. It's hard enough for a soul to be in this human machine. आत्मा के लिए वैसे ही बहुत कठिन है इस जब मनुष्य देह में आई हुई है वो। Most human beings can feel the pain so much so that they have to take intoxication or smoke or entertain themselves because they can't be with the pain. They have to distract themselves. आत्मा के लिए इतना दर्दनाक होता है इस देह में आना कि उस दर्द को छिपाने के लिए वो शराब पिएगा, कुछ ना कुछ ऐसे गलत कार्य करता रहेगा। Now we come to Krishna consciousness, and not only are we in the human machine, we say we're not going to take intoxication, and we're actually going against the grain of the material world. We're swimming upstream. और अब जब हम भक्ति में आते हैं तो आत्मा के लिए कितना कष्टदायक हो जाता है कि ना केवल इस मनुष्य देह में है, दूसरा वो जो कृत्रिम साधन थे शराब नशा इत्यादि करना वो भी नहीं कर रहे, और जो इस भौतिक संसार का बहाव है उससे विपरीत दिशा में तैरना पड़ रहा है। We're going against the grain of the material world. हम भौतिक संसार के बहाव से उल्टा चल रहे हैं। Do we encourage ourselves at every step? क्या हम अपने आप को हर कदम पर प्रोत्साहित करते हैं? Or do we beat ourselves up for not being perfect? या फिर हम अपनी पिटाई करते रहते हैं कि मैं पूर्ण नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं? Tell me, what do we do? बताइए हम क्या करते हैं? क्या अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं या फिर अपनी ही पिटाई करते रहते हैं? Mostly बीट। we beat ourselves. अधिकांश हम अपने आप की पिटाई करते रहते हैं। Now,
in Krishna consciousness, we have the framework and we have this ideal up here of what perfection looks like. कृष्ण भक्ति में हम सब कुछ लिखित रूप से हम सबके लिए उपलब्ध है और पूर्ण स्थिति क्या है, आइडियल क्या है, वो बताया गया है हमें. So we have this ideal and we think, I shouldn't be down here, I should be there where perfection is. I shouldn't be down here, I should be up there. I shouldn't be down here, I should be up there. तो हमें ये स्पष्ट होता है कि आइडियल क्या है और हम ये सोचते हैं कि मैं जिस धरातल पे हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे वहाँ होना चाहिए, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझे वहाँ यानी आइडियल के लेवल पे होना चाहिए. तो ऐसे हम बारंबार इसी के बारे में सोचते हैं. Tell me, where am I? तो बताइए हम कहाँ पर हैं वास्तव में. Where am I? Nowhere. I'm nowhere. तो वास्तव में हम कहीं के नहीं रहते. I'm not there. ऊपर तो जो आइडियल है वहाँ पहुँच नहीं पाए. That's clear, and I'm sure I'm not here either. और यहाँ पर भी नहीं है. Because I'm not accepting where I am. क्योंकि जो धरातल है उसको स्वीकार नहीं कर रहे. If I don't accept where I am, I'm floating, I'm in limbo. I can't take any steps. तो जब अपने वास्तविक धरातल को स्वीकार नहीं किया और ऊपर के धरातल पे है नहीं, तो हम एक तरह से तो हवा में उड़ रहे हैं, तो अगला कदम कैसे उठाएंगे फिर हम. And then I feel stuck. और फिर इस तरह हम फंस जाते हैं. And then I beat myself up. और फिर अपनी और पिटाई करते हैं. That's exhausting. और इससे हम बहुत थक हार जाते हैं. So, I'd like to say, you know, we think we're looking for perfection. तो हम ये बोलना चाहेंगे कि हमें लगता है कि हम पूर्णता ढूंढ रहे हैं. Actually, we're looking for connection. वास्तव में हम पूर्णता नहीं, हम संबंध ढूंढ रहे हैं. We want connection from our parents. हम माता पिता से संबंध जोड़ना चाहते हैं. And we think if we're good and they give us a praise, that's connection. और हम सोचते हैं कि यदि उनकी बात मान के अच्छे नंबर लेके आएंगे, वो हमें थपथपी देंगे, तो यही हमारा उनका संबंध है. We think if we do everything right in Krishna consciousness and we're externally perfect, we'll be able to love Krishna. हम सोचते हैं कि हम बाहरी रूप से यदि भक्ति में सब कार्य सही करते रहेंगे, तो फिर हम कृष्ण से प्रेम कर पाएंगे, हमारा संबंध हो जाएगा. That will be connected to Krishna. तो इसका मतलब हम सोचते हैं कि बाहरी रूप से हम भक्ति सही कर रहे हैं, तो इसका मतलब कृष्ण से हमारा संबंध जुड़ गया है. So we're looking for perfection, but actually we're looking for perfection as a means of getting connection. तो वास्तव में हम पूर्णता ढूंढ रहे हैं, परंतु पूर्णता नहीं ढूंढ रहे, पूर्णता के माध्यम से हम अपना संबंध भगवान के साथ ढूंढ रहे हैं. Now, how can we get love of God? How can we get connection with Krishna if we don't even know who we are? तो जब तक अपने आप को नहीं जान पाएंगे, तो कृष्ण से कैसे संबंध बना पाएंगे, कैसे उनसे प्रेम कर पाएंगे. If we're not connected with our soul self, just at least a little, तो हम थोड़ा सा भी यदि अपनी वास्तविकता से संबंधित नहीं हैं, what's going to be able to connect with Krishna? Krishna doesn't want to connect with our false ego. तो फिर हम कृष्ण से संबंध कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि भगवान को तो हमारे मिथ्यांकार से कोई संबंध जोड़ना नहीं है. And that's not us anyway, so the real us isn't really connecting with Krishna, so we still don't feel connection. तो हमारा वास्तविकता जो है, वास्तविक स्वरूप है, उसका संबंध भगवान से जोड़ना है, पर हम जोड़ नहीं पाते. We gotta connect with that soul self underneath all those layers. तो जो सब मिथ्या अहंकार के आवरण हैं, उनके नीचे जो आत्मा है, उसका संबंध भगवान से जोड़ना है. If we don't love, respect, and connect with that soul self, we'll never be able to love, connect, and respect anybody else, even Krishna. जब हम जो अपनी वास्तविक स्थिति है, आत्मा, हम उससे प्रेम करना, संबंध जोड़ना, उसका आदर सम्मान करना नहीं सीख पाते, तो हम किसी के साथ भी ना प्रेम कर पाएंगे, ना आदर कर पाएंगे, ना संबंध जोड़ पाएंगे, यहाँ तक कि कृष्ण के साथ भी नहीं. It's not going to be real connection. It's going to be like an imagination of connection. वास्तविक संबंध जुड़ ही नहीं पाएगा, लगेगा कि संबंध जुड़ गया है, परंतु वास्तविक नहीं होगा. Does that make sense? तो क्या ये समझ आ रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं? We're looking for connection. We're not looking for perfection.
तो हम लोग वास्तव में पूर्णता नहीं ढूंढ रहे, हम लोग वास्तव में संबंध ढूंढ रहे हैं. So I went over a lot of topics here. तो मैंने कई चीज़ों के बारे में बताया अभी आपको. And probably I said things in ways that you have never heard before. और मैंने शायद ये चीज़ें इस तरह बताई आपको कि आपने पहले कभी ऐसे नहीं सुनी होंगी. But I see some of you shaking your head like something's connecting. परंतु कुछ लोग अपना मुंह हिला रहे थे कि हाँ आपको कुछ समझ आ रहा है. So I just want to give you a little chance to ask a few questions, and I did want to introduce books that I have that go more into this detail. तो मैं अब हम चाहेंगे आपसे आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं और फिर जो हमारे पास पुस्तकें हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपको. Yeah, so does anybody have any thoughts, questions, or even comments on what you understood me to say? तो आप में से आप बता सकते हैं कि जो मैंने बताया वो आपको समझ आया, क्या समझ पाए, कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, कुछ कमेंट करना है तो आप बोल सकते हैं. And it's okay, you don't have to prove yourself by asking a good question. You can ask any question, and you're allowed to express yourself. और कुछ आपको किसी को प्रूव नहीं करना है, प्रमाणित नहीं करना है, तो जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं. Please. Haribo, do we have a third mic? Because I want everybody to be able to hear. Does it work? Whoops. Thank you. Go ahead. I still can't hear you. Gotta turn it on. Hare Krishna. Hare Krishna Maji, it was a wonderful lecture. Thanks a lot for this. The very first question that I have is, you said we have to connect with our own selves. So how do we do this? It's nice to hear this, but what's the procedure? How do we do this? Well, we have to first understand who we're not that we think that we are. Okay? So when I was 8 years old, I went to a school that they had a lot of homework, so much homework. And I compared myself to other people, and I thought, oh my gosh, everybody's smarter than me. If I'm going to make it in this class, I got to work really, 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 really hard. I became a workaholic at the age of 8. So that's who I kind of identified myself as at that point, because that really, I could produce a lot of results being a workaholic. I could get some good grades. I could, finish school. When I became a devotee, I could collect money. I could do a lot of things. But that identity was running me. It was a program. I was on the default mode, and the default mode was be a workaholic. So that means I worked 18-hour days, which, hey, everybody thought, hey, you're a great devotee. Look at you, you're working so many hours. I'm sorry. I'm answering the question and nobody's translating. Go ahead, you translate. Sorry. I'm sorry. I forgot. I got too passionate there. Sorry, everybody. Go ahead. Let's just, say we have to know who we aren't in order to connect to who we are. तो प्रश्न था कि माताजी जो आपने बताया तो समझ आया, परंतु हम कैसे इस वास्तविकता तक पहुँचें कि मैं कौन हूँ. तो माता ने उत्तर में बताया कि उसको जानने के लिए कि हम कौन हैं, उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम कौन नहीं हैं. उदाहरण के लिए अपने जीवन से बताया, जब हम छोटे थे 8 साल के, तो बस अच्छे नंबर लाने हैं, क्लास में फर्स्ट आना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सबके सामने अपने को प्रूफ करना है. वो करते करते इतनी बड़ी आयु हो गई और सब करते करते भक्ति में आया. भक्ति में भी वही चलता रहा कि सबके सामने प्रूफ करना है, नंबर फर्स्ट आना है, और फिर करते करते यहाँ पहुँच गए कि सब कह रहे हैं आप बड़े अच्छे भक्त हैं, 18 घंटे काम करते हैं. तो बाहरी दिखावे के मात्र से ही बस भाग दौड़ में लगे रह जाते हैं. Yeah, so when I was 8, I became a workaholic. And I kind of identify with that. That looked good. Felt pretty strong about that. So, but that ran me like the default mode on the computer. When you turn on the computer,
when you open Microsoft Word, maybe you get Times New Roman, 12-point or 10-point, and you get 1-inch margins. Default mode. तो जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट मोड होता है कि ये वाला फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट साइज है, तो उसी तरह ये हमारा डिफ़ॉल्ट मोड है कि बस लगे रहो बाहरी रूप से. So we're not our default modes. परंतु हम स्वयं डिफ़ॉल्ट मोड में नहीं हैं. So when we detect what our default modes are, we can learn how to push option buttons and we can practice being something different. तो जब हम समझ जाते हैं कि हमारे डिफ़ॉल्ट मोड क्या हैं और ये भी समझ जाते हैं कि और ऑप्शंस भी हमारे लिए उपलब्ध हैं, तो फिर हम अभ्यास के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से दूसरे. I talk about this in these books here, like the false ego mechanisms, and I talk about the anarthas and the different things that we can practice, how we can practice new habits. तो इन पुस्तकों में यही बताया है कि हम कैसे इन ऑप्शंस को अपने जीवन में ढूंढ सकते हैं और फिर उन ऑप्शंस को अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कर सकते हैं. Our false ego mechanisms and even our anarthas, they're just habits. They're just habits that we've practiced for a long time and we've gotten really good at. तो हमारे जो मिथ्या अहंकार के मैकेनिज्म हैं और जो हमारे अनर्था हैं, बस वो केवल आदतें मात्र हैं जो कि पिछले कई जन्मों से हमने इकट्ठी कर ली हैं. However, we don't distinguish them as habits and we think that's who we are, then we don't have any choice in the matter. परंतु हम इस वास्तविकता को नहीं देख पाते कि वो केवल एक आदत मात्र है. उस आदत को अपने आप से हम जोड़ लेते हैं और सोचते हैं हम ऐसे हैं. However, if the real me, the soul self, distinguishes, wow, I work really hard a lot, then I can have some choice to do something different. परंतु यदि हम वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं और आत्मा ये सोचती है कि ओ मैंने इतना मेहनत की, इतना भागदौड़ की, तो देख सकती है कि इतना भागदौड़ करने के अलावा और भी कुछ चीजें हो सकती हैं. So I got to connect with that soul self who becomes the observer. The soul self becomes the observer to notice, what is it that I'm doing? What am I doing? That's not who I am. The soul self can observe and witness, be the witness. तो बजाय इसके कि जो आत्मा है वो बस एक भागने वाला व्यक्ति बना रहे, हमें इस स्थिति पे आना है कि आत्मा एक तरह से साक्षी बन जाए और देख पाए कि क्या क्या चॉइसेस मेरे लिए अवेलेबल हैं और हम क्या कर सकते हैं. So we have to connect to the soul self. तो हमें अपने वास्तविकता से संबंध जोड़ना है. Krishna is the witness in our heart. कृष्ण हमारे हृदय में साक्षी हैं. And we're also a witness of our different default mechanisms. और हम भी साक्षी हैं कि क्या हमारा डिफॉल्ट है और क्या हमारे पास चॉइसेस हैं. Does that make sense? तो A little bit. It takes some practice. And I have a question back here and one over here. So you go and then you can go. And stop me when I start answering. Hare Krishna, Mataji. Hare Thank Krishna. you very much, Mataji. Hari Bol. Mataji, continuing in that question which Satya has asked, I just want to translate it. I mean to say what you have said. Like you mean to say that in all scenarios we have to true to ourselves. First thing. Say again. We have to true to ourselves. Well, in all that's scenario. one of the egos. We don't have to prove ourselves, but that's what we do to cover our pain. Because what happens, Mataji, I just want to explain. Like Okay. normally, since we come across many lectures, although it is we are very fortunate to listen to you, but at the same time, like when we come to the Bhagavatam or the lectures, so we hear about various personalities, from scriptures or from our surroundings itself, or senior devotees, senior most devotees, or our gurus, ISKCON gurus. And when we see, we listen that they came from that background and then they worked hard and they reached that level. At the same time, it is always being told that you have very less time. So you have to be very, very, utilize each and every moment as it is very, very precious. Because fighting with anarthas is an issue, which goes on for a long time.
And then when you once realize it, then probably you are in the circumstance, where in the surroundings you find that you have one devotee who had been with you, from past 10 years or 5 years or whatever. He has already passed you, for example, he has become, first initiator or second initiator, or probably he has become brahmachari or whatever I mean to say. So, same time, since, on one side he's being appreciated, on the other side he's being, shown that this is basically the, yardstick, which you have to compare yourself, whatever I mean to say. So under all these circumstances, one becomes confused. Yes. And then probably, just to reach to that level, he continue running without Yes. acknowledging himself, without Yes. knowing himself. Yes. So We're running without acknowledging ourselves. That's what we're doing. We're running like we're running to a goal. Krishna consciousness is not a goal where you get to, I made it, I'm Krishna conscious. It's not like that. Krishna conscious is an ongoing, eternal process. It's eternal. Krishna is ever expanding. He's ever growing. He's Navayovanam. That means we have to be ever growing to keep up with him. but does it also mean that I should be always satisfied with myself? Don't you think that in case if I judge myself, then under few circumstances I can be wrong enough, and that's why I need to continue connecting with my senior devotees to find out where do I stand? There's a difference between judging and shaming ourselves and being curious. Wow, why did I do that? Can I do something different? Did that work? Did that not work? There's a difference between saying, oh my gosh, I am such a blah, 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 and wow, I can't believe I said that. That probably really hurt that person. Wow, I wonder how I can mend that relationship. There's a different energy. The proving energy is a heavy, intense energy. Judging energy, it's intense. The curious energy is like, wow, what could I do? And it's not that we're always satisfied with ourselves, but we don't have to, but it's not that we're satisfied with ourselves, but we're more curious rather than judgmental. Why do I keep doing that? Why do I keep doing that habit that I don't really want to do? It's not about resisting and fighting the anarthas. It's about detecting and disarming. Disarming means when you disarm a bomb, you take the wires and disconnect the wires. It's not that you fight and hit the bomb, you're gonna explode it. You carefully disconnect the wires. That's more what we have to do. Carefully disconnect through curiosity and interest and prayer rather than fighting and hitting and rushing and pushing. But Mataji, last question, But do you think at our different levels, all of us are competent enough to do this, what you are saying? Because mostly what happens, as I already told, that we connect with our seniors, our Bhakti Vriksha leaders or Seva authority Yes. to find out where do I stand, whether I'm going in right direction or not. Because if I think that I am okay, then probably I might get puffed up, under the circumstances, and that might add to my ego instead of resolving it. Yes, I hear what you're saying. I hear your concern about getting puffed up and about being confused. So this process takes self-honesty. It takes self-awareness. It takes, you got to be really honest. But when you're honest with yourself, there's a difference in energy. There's a difference in energy. If someone's saying, do this, but every time you do that, you feel upset and angry, maybe that's not the best thing for you to do, even though maybe it's the best thing for the other person to do. You're inside your body, you're getting some information. You might be able to say,
no, this food isn't good for me. I shouldn't eat this. I can't digest this. Oh, this is great. Everybody else is eating. What's your problem? I can't digest this. So it's really about being in touch and being self-honest. Now, I feel like some people missed out on something here, but can you say can he say something to kind of recreate it? Can I basically say that it is mainly about self-loving, as you said, self-honest, rather than belittling oneself, Yeah. treating oneself, Yeah. honest to oneself, Be- not getting into comparative tendencies. Yeah, we don't have to compete with anybody. We just have to take care of our own self and be on our path. We can compare ourselves to how we were yesterday. Oh, yesterday I did this, today I did this. But fighting and comparing with other people, it creates an energy of anxiety and resistance. Whereas curiosity kind of opens our mind to like, wow, why did I do that? Why am I so attached to that? Just being curious. So he can say something. तो मुख्यतः इसमें यही पॉइंट है कि हम लोग अपने आप को जब भक्ति में भी आते हैं तो एक प्रतिस्पर्धा में लग जाते हैं। हम कुछ ना कुछ कार्य करना चाहते हैं और बाकी भक्तों को भी कार्य करते हुए देखते हैं और फिर देखते हैं कुछ समय के बाद अरे उसकी पहली दीक्षा हो गई, दूसरी दीक्षा हो गई, हमसे आगे निकल गए, तो फिर उस दिखावे वाली दौड़ में हम लोग आगे चलते चले जाते हैं। तो उत्तर में ही बताया गया है कि हमें प्रतिस्पर्धा से बचना है और अपने आप को हमेशा ये नहीं सोचना कि मैं छोटा हूँ, नीचा हूँ, निम्न हूँ, अपने आप को ही जूते मारते रहना कि मैं बहुत अधम हूँ, ऐसा नहीं करना। मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा भगवान का अंश है और आत्मा इस संसार में भक्ति करने का प्रयास कर रहा है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। तो अपने आप से प्रेम करना सीखना है। हमें कंपेयर करना है तो अपने कल से अपने को कंपेयर करना है कि कल हमने क्या किया और आज कैसे बेहतर कर सकते हैं, ना कि दूसरों के साथ अपनी तुलना करनी है कि वो कैसे कर रहे हैं और हमें कैसे करना चाहिए। तो मुख्यतः Okay, you can talk to me more later. I want to say one thing. It seems that some people have to go. Is the class supposed to go till 9? Okay. If some people have to go, we're going to give class tomorrow. It's going to be 7:30 to 9. I don't want to hold you up if you have something that you have to do. But if you can stay and you can come back tomorrow night, you'll get a lot more of what I'm saying. Otherwise, you're only just going to get a piece, and it's going to be a piece of the puzzle, and you won't see the whole thing. However, if you have to go, maybe you have to go. But it's only going to be 15 more minutes if you can wait. तो ये कक्षा 9 बजे तक चलेगी। आप में से कुछ जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं, परंतु ये भी है कि कल भी कक्षा रहेगी 7:30 से 9। तो अभी आपने थोड़ा सा सुना है, परंतु पूरा सुनेंगे तो अधिक लाभ होगा। तो आप चाहें तो 15 मिनट रुक भी सकते हैं और फिर कल 7:30 से 9 कक्षा है और सबके लिए प्रसाद भी अवेलेबल है, जो जा रहे हैं उनके लिए सूचना है। Okay. There was one question over here. Yeah. Right over here. Oh, okay. Okay, that's not going to work. Mataji, thank you for a wonderful lecture today. Mataji, I was just reading in your book, you mentioned the word myths, M-I-T-H-S, and I really like that. Mataji, my question is that as I heard your lecture and I'm sitting right now, for a moment I can connect to my soul self, but as soon as I go back to my own world, I know that myths is going to be there, it's going to attack me, and once again I feel the gap between the real self and the ideal self I imagine, and again I'm going to be plunged in that guilt and everything. Every time you're plunged into the guilt, I'm sorry. You go ahead, translate. धन्यवाद माताजी, बहुत ही सुंदर प्रवचन के लिए। मेरा आपसे ये प्रश्न था कि आपकी पुस्तक में आपने मिथ्स MITHS के बारे में बताया है, तो उसमें आपने बताया है कि, तो मेरा बेसिकली ये प्रश्न है कि अभी मैं आपका जब प्रवचन सुन रही हूँ तो मुझे सोल लेवल पर कुछ अनुभूति थोड़ी बहुत हो रही है, पर मुझे पता है कि एक बार घर जाने पर वापसी मुझे अपनी ईगो से डर लगेगा, मुझे हर एक चीज़ से डर लगेगा
कि ये वापस मटीरियल कॉन्शियसनेस में ले आएंगी, तो कैसे इस चीज़ से बाहर निकला जाए? When we're learning to walk as a little kid and we fall down, what do? We get up again and start practicing walking again. Our muscles are weak. Our spiritual muscles are weak, but Krishna's given us all these qualities. We just haven't exercised them enough. So yes, we'll fall, and then we'll get up, and we'll exercise some more, and then we'll become more aware, and then we'll fall, and then we'll get up, and we'll exercise again. We don't add meaning. We don't make it mean that I'm fallen. We're practicing learning how to walk against the grain. That's going to take some time. Practicing mridanga takes time. Practicing harmonium takes time. Practicing getting out of the material world, that takes time. But if we acknowledge each little step we're taking, like when a little child, yay, you took a step. If we acknowledge one little step we take, then we're going to want to take another step. Does that make sense? Can you translate that? Yes, माता जी ने कहा कि जब हम भक्ति पाथ पर, जैसे छोटा बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है तो अगर वो गिरता है तो वो दोबारा उठता भी है, तो उसी प्रकार से हम उसे प्रोत्साहित भी करते हैं कि चलो ठीक है, इसने एक और कदम आगे बढ़ाया। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति पथ पर चले तो हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि चीज़ें टाइम लेंगी और इन टाइम देना भी है, पर हाँ, हमें अपनी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना है और इस तरीके से प्रोत्साहित वे से आगे चलना है। Yeah, it's a practice. We have to practice. We have a lot of habits that we've developed over lifetimes. Lifetimes. It's going to take some time to practice new habits. Now, as far as what's right and what's right for you may not be right for you. I like to use the word appropriate. I don't like to use right and wrong because it's kind of in the world of duality. I like to use what's appropriate. What's appropriate for a child may not be appropriate for an adult. What's appropriate for me today may not be appropriate tomorrow. It's an ongoing conscious process. It's not like we get the answer and then we know what to do. We really have to be self-aware. Go ahead. तो इतने जन्मों से जो हमारी कंडीशनिंग होती आ रही है, उसको चेंज होने में, बदलने में टाइम लगेगा। और जैसे कि जो चीज़ मेरे लिए सही हो सकती है वो किसी और के लिए सही नहीं हो सकती है, तो हम एक्नॉलेज करते हुए इन चीज़ों को चलना है और ये ध्यान रखते हुए कि ये एक प्रैक्टिस है, ये एक प्रयास है। और ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब ये नहीं कि तुरंत कोई फिक्स तुरंत ठीक हो जाएगा, ये एक निरंतर चलने वाला प्रयास है। Okay, I wanted to take her question because she's been waiting, and then, yeah. Hare Krishna, Mataji, thank you very much. Mataji, personally, I'm struggling very much every day, basically, to find a balance between trying to overreach or trying to be over-complacent. You know, every day. So I just wanted to ask you if there is any practical tip to do a reality check on an everyday basis that we can, do on ourselves to know whether we are, toppling over to this side or to that side. And the second part of the question is... Well, can I answer that first? All right. And translate that. Translate that. Okay. तो धन्यवाद माता जी। मेरा प्रश्न ये है कि रोज़ की मेरी एक लड़ाई रहती है इस चीज़ को लेके, क्योंकि जैसे अभी प्रभु जी ने भी पूछा कि हम रोज़ आचार्यों के बारे में पढ़ते हैं और हमें ये भी पता है कि हमें आचरण मतलब उनका अनुसरण करना चाहिए, तो रोज़ की एक लड़ाई रहती है इस चीज़ की कि कितना कब मैं ज़्यादा करने की कोशिश कर रही हूँ और कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने बहुत ढीला छोड़ दिया अपने आप को। तो ये रोज़ की स्ट्रगल जो है उसके लिए कुछ हम कोई ऐसा टिप, प्रैक्टिकल टिप हमें मिल सकता है जिससे हम ये जान पाएँ कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? Yeah, the main thing that helps me to keep my balance is integrity. Honoring my word. So if I say I'm going to do something,
then I do it. Now, if I forget, I didn't write it down, or if I say I'm going to do this for you, and then I say I'm going to do this for you, and they're at the same time, I'm not keeping track. I'm not keeping my balance. And if I forget things, or I take on too much, I forget things. I'm not keeping my integrity. So when I can't keep my integrity, I'm like, I'm trying to do too much. Or if I get sick, I'm pushing myself too hard. If I'm stressed out, I'm pushing myself too hard. If I'm unhappy, what's going on? Krishna consciousness is joyfully performed. So there's a lot of signals that come, but we don't know how to read those signals. As we get more adept at reading the signals, this is what we're going to talk about tomorrow, then we can keep the balance. So you can translate, give you a break. तो माताजी ने बताया, प्रभु जी आप कर दीजिए। प्रभु जी इंटेग्रिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? Self-honesty, integrity, and integrity is honoring your word also. Yeah, so हिंदी में शब्द नहीं मिल रहे। ईमानदारी, हाँ ठीक है, यस मैम। सो माताजी ने बहुत अच्छे से बताया कि हमें ईमानदार रहना चाहिए अपने साथ, और कृष्ण कॉन्शियसनेस जब हम फॉलो करते हैं तो हमें बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं, बहुत सारे संदेश मिलते हैं अपने जीवन में। कभी कभी हम ज़्यादा थके हुए थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या हम खुश नहीं हैं अगर अंदर से, तो हमें ये सब साइंस को रीड करना आना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कुछ सही नहीं चल रहा है। तो माताजी बता रहे हैं कि इसके बारे में माताजी कल और डिटेल में बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन और अच्छे से डील हो पाएगा। Okay. And So just take one more question, and then I want to. You want a question? okay, Can Mataji, can he? Of course, Mataji. Okay. So you ask a question, and then I want to say one more thing. Go ahead. No, you can ask. Yeah. Thank you for class. It's really nice. I'm thinking, what is a symptom of us actually connecting to that buried soul, or what is a symptom of us actually advancing or making progress in the uncovering of that soul, opposed to adding another layer, right, where we feel comfortable, we feel like there is some satisfaction because there is some sense of happiness, or maybe, I guess what I want to ask is, how do we discriminate between what's adding another layer and what's removing a layer? Right. You want to translate that? What's the difference between, removing and adding? तो मेरा प्रश्न है कि जब हम कृष्ण भक्ति का अभ्यास करते हैं तो कैसे भेद कर पाएं कि जो हम कर रहे हैं उसके माध्यम से मिथ्या अहंकार का एक आवरण हट रहा है या उसकी बजाय दूसरा आवरण और जुड़ रहा है उसके ऊपर। Matter is heavy and spirit is light. पदार्थ जो है वो भारी है और जो आत्मा है वो हल्की है। If we can't feel comfortable in every situation, we feel uncomfortable, we feel like we have to hide something, or we don't feel comfortable inside of ourselves, those are symptoms of that we're burying something. तो जब हम परिस्थितियों में कंफर्टेबल नहीं हैं और हमें कुछ चीज़ों को छुपाना पड़ रहा है, हम अपने आप को सुव्यवस्थित नहीं रख पा रहे हैं, तो ये चिन्ह है कि हम कुछ आवरण और जोड़ रहे हैं मिथ्या अहंकार के। At the same time, thinking I'm detached and I don't need anybody and I can work really hard and look what I can do, that could also be burying something, denial. और साथ के साथ ये भाव रखना कि मैं तो अनासक्त हूँ, किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं इतनी सेवा कर सकता हूँ, तो ये भी हो सकता है कि हम एक धरातल एक आवरण और मिथ्या अहंकार का अपने ऊपर ला रहे हों। So besides integrity, the other thing that really helps me is being curious. तो अपनी वास्तविकता को पहचानने और उसके साथ ईमानदार रहने के साथ साथ दूसरा है कि जिज्ञासु रहना। Asking questions to myself.
अपने आप से प्रश्न पूछना, asking questions to Krishna. Is this what you want me to do? Am I being proud? Please show me if I am. कृष्ण से प्रश्न पूछना कि आप चाहते हैं वास्तव में कि मैं ऐसे ही करूं? क्या मैं मिथ्या अहंकार से कार्य तो नहीं कर रहा? कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए. And if we say prayers and then we're willing to accept whatever comes, then that means we're not trying to like make something happen. We're kind of being able to be with whatever situation Krishna sends. तो अगर हम ये भाव प्रार्थना का रखते हैं और फिर जो भी भगवान हमारे जीवन में लाते हैं उस परिस्थिति को हम स्वीकार करते हैं, तो फिर इसका अर्थ हुआ कि हम कुछ बनावटी चीज नहीं कर रहे हैं, दिखावा नहीं कर रहे हैं. If we have any attachment to it being one way or another way, there's something we're holding on to. और यदि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही हो, इसके प्रति आसक्त रहते हैं, चाहे ऐसा हो या वैसा हो, यानी बीच की परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए हम एक्सेप्ट नहीं करते बीच की परिस्थिति को, तो इसका मतलब हम मिथ्या अहंकार की स्थिति में हैं. And we can notice that. It's like, और वो हम देख पाते हैं अपने आप. yeah. And then of course, you know, quick fixes might make us feel good momentarily. You know, however, they don't generally last. So whenever there's frustration or upset or anger, it's just the time, oh, well, what's going on now? Let me look. And it's not like we're going to get to a place where we never have any upset, but it's like, being curious, what's going on now? So, you know, it's not a judging, it's more like a being aware and like, oh, yeah, oh. You'll feel it. You'll be able to sense it. We are sentient beings. तो हमें क्विक फिक्स सॉल्यूशन के पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लंबे समय तक चलेगा नहीं. और कभी कुछ नकारात्मक चीज़ें या भाव आते भी हैं, तो हम उनके प्रति भी जिज्ञासु हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, क्या बेहतर कर सकते हैं, और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं. I wanted to thank you all for your time and your attention. I know this is a pretty deep, heavy topic, but we don't talk about it. It's just this big, vague cloud, and I think the more we talk about it and name it, it gives us a chance to pull it apart. तो वास्तव में बहुत बड़ा और घना बादल है. इसके बारे में बातचीत नहीं करते, पर जितना बातचीत करेंगे उतना इसमें हम कुछ चीज़ें ढूंढ पाएंगे जो हमारे लिए अर्थ लेकर आएंगी. I do have a few copies of these books. If you haven't gotten them, I'm leaving India within a week. And this part is about the mind and the false ego, and this is about the anartas. And you can see that the soul and the super soul are kind of getting to know each other here. तो ये दो पुस्तकें हैं, दो भाग में हैं. पहले भाग में मन के बारे में दिया गया है और दूसरे भाग में अनर्थों के बारे में दिया गया है. और आप चित्र में देख रहे हैं आत्मा और परमात्मा दोनों पक्षी के रूप में दिखाए गए हैं. तो आप में से जिनके पास पुस्तक नहीं है, आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं. So I'll sign the copies. They're 800 rupees for the set. It's really one book divided into two. तो दोनों पुस्तकों की सेवा है 800 रुपए की. And I have a QR scan if you don't have cash. तो आप QR के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं. तो माता जी 1 हफ्ते के बाद विदेश वापस जाने वाली हैं. तो आप में से जिनके पास ये पुस्तकें नहीं हैं और अधिक डीपली इस विषय को समझना चाहते हैं, तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं और माता जी इसमें पर्सनली हस्ताक्षर करके देंगी आपको. हरे कृष्ण. Thank you very much. You know, I hope, how many of you would like to come back tomorrow to hear the rest? तो आप में से कितने लोग कल दोबारा आना चाहेंगे बाकी सुनने के लिए? Please do come back, because I really want to share. Really, I put all my mistakes in these books so you don't have to agonize and make the same mistakes I made. तो आप कृपया कल भी आने का प्रयास करिए. और मैंने अपने जीवन में जो गलतियां की और उनसे शिक्षाएं प्राप्त की, वो सब मैंने इन पुस्तकों में डाल दिया है, ताकि इनके माध्यम से आप शिक्षा लें और जो गलतियां मैंने की वो आप अपने जीवन में गलती ना करें. Thank you, thank you, thank you. 𝒍𝒘𝒂𝒏𝒕 𝒂𝒉𝒂𝒏𝒕 𝒂𝐻𝐼𝐶𝐶 Hare Krishna. Krishna.
थैंक यू वेरी मच। हरे सुखावा माता जी की, श्रील प्रभुपाद की जय। So we are extremely grateful, Mataji, for this wonderful and deep session and very thought-provoking, and making us come face to face with the real self, rather than being, rather than flattering ourselves and being flattered by others. So thank you very much. माता का बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर और डीप सेशन के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल भी सेशन रहेगा 7:30 से 9, और अभी आप ये पुस्तकें माता जी से ले सकते हैं, और गीता भवन में आप सबके लिए प्रसाद है, प्लीज़ प्रसाद पाके जा सकते हैं। हरे कृष्णा। एक और सूचना है, जैसे आप भक्त लोग जानते होंगे, परम पूज्य कदम स्वामी महाराज हैं, जो कि इस्कॉन संस्था में बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, और उनका कीर्तन बहुत ही सुंदर कीर्तन होता है। अपने से कई भक्तों ने किसने सुना है महाराज का कीर्तन या देखा है, तो आपको ये भी सूचना होगी कि महाराज का जो कैंसर है वो बहुत हाई स्टेज में है, इसलिए महाराज भारत आ गए थे वृंदावन में। तो अभी जो आज सूचना आई है, तो महाराज का एक तरह से आखिरी समय चल रहा है, केवल पानी ही ले रहे हैं, और महाराज बेड के ऊपर हैं, उनके आसपास भक्त हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं। तो हम सब लोग भी मिलके महाराज की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और हम लोग तो ऐसे महाराज के लिए क्या प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु फिर भी हम राधा गोविंद को प्रार्थना कर सकते हैं कि महाराज की जो यात्रा है प्रभुपाद के चरणों में पूर्णता की ओर, ये आगे बढ़े महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम चाहें तो अपने शुद्धिकरण के लिए जो मैसेज आया था, हम कुछ एक्स्ट्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं, महाराज और प्रभुपाद जी कनेक्शन, और हमें महाराज की कृपा प्राप्त हो उसके लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय।